नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। वेलकम एवरीवन। आज का एएमए बहुत स्पेशल है। जयपुर डायलॉग्स इस समय छा रहा है नेशनल मीडिया पे फॉर ऑल द राइट रीजंस आई गेस। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, डू टेल मी। और साथ में आपको बता दूं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। यू कैन आस्क क्वेश्चंस थ्रू द व्हाट्सएप नंबर विच इज स्क्रॉलिंग बिलो द स्क्रीन, एंड you can also ask through super chat। और सुपर चैट से आप पूछ लीजिए, चाहे व्हाट्सएप से पूछ लीजिए, दोनों तरीके हैं सवाल पूछने के। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है आर्यवीर जी का। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सावरकर एंड अंबेडकर? हाउ मच आर दे क्लोज एंड फार? बिकॉज अंबेडकर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पर्सन। In riddles of Hinduism, he abuses Shiva Ramakrishna, but he also says good things about Upanishads and exposes Islam. Yes, for that, you have to read my book. All religions are not the same, because the misunderstandings or lack of understanding that he displayed about symbolism in Sanatan Dharma are very common, actually. So please do go through my book and look at the Sanatan umbrella and how the Indian iconography is actually having its roots in the Vedas. Then you will be able to figure out that this gentleman understands from the same misgivings, same misconceptions, which his Western masters suffered from, because most of his higher education was not only in English, but it was also abroad, and that too in America. And Americans were the key evangelists of those times. So definitely he is very much impressed by the Americans. And because he is very much impressed by the Americans, he has imbibed a lot of their conceptions or misconceptions. Savarkar and Ambedkar, I don't think there is any historical relations. And I haven't seen at least I haven't seen Savarkar talking about Ambedkar as such, and the kind of movements that Ambedkar started later on. And Ambedkar started goaded by the British and in competition with M. Raja of Tamil Nadu, who was the actual mass leader of the Dalits at that time. So between Savarkar and Ambedkar, I don't think there is much commonality. Savarkar started his what is called the Achutodhar. These days we do not call them Achut, we call them Dalit, but in those times they used to be called Achut. So he started his reform programs for the Dalits much earlier than anyone else. He started his Swadeshi programs in the first decade of the 20th century. And he, as soon as he was let off and put in house arrest, under house arrest in Ratnagiri district, he started his Patita Pavana Mandir, which was, I think it was a revolutionary idea at that time to make it open to everybody. So he's far ahead of everybody, including Gandhi, including Ambedkar. Parth Chopra, sir, what do you think of Acharya Prashant? Well, see, I do not like to comment on him, but the only thing is that I happened to watch recently an episode from him on Kanyadan, where he was speaking about everything else except Kanyadan. Next. I've been sending multiple requests to talk about NWO through WhatsApp. The only response I get is noted. Do JD not offer any Hindus to talk? Well, you have to first convince us that it is something that we would be excited to talk about. And then for this purpose, what you can do is that we have many WhatsApp groups. And specifically for this purpose, the WhatsApp group number 1 can be joined. Please join that. Send a request to join that. Tebe Singh, Ram sir, suggest a Quran in Hindi to enlighten fool Hindus and counter Mormons.
You see, most of the translations in Hindi are sanitized because they do sanitize every translation that is going to be read by the non-Muslims. They do that. But still, there is an app called Tanzeel.net. And Tanzeel.net offers you translations from almost every language and multiple translations from one language. And there are two translations in the Devanagari script in that particular application. Those are very good. I find them very good. Tebe Singh Jai Shri Ram, Shashi Tharoor has raised questions about giving ticket to Sunil Sharma from Jaipur or his association with TJD. Your take, sir. I did answer him. I don't know whether you noticed that quote tweet. I'll ask my desk to please put it on the screen. The reply that I gave to Shashi Tharoor. And I think I will also like to, one of the programs that I did on Mr. Shashi Tharoor probably needs to be replugged. It needs to be replugged. I think I'll try and share the screen then. Okay. Let me check my Shashi Tharoor. I'll find it difficult to locate it now. It will disrupt. But I did ask him that this epiphany that he was talking about, what kind of epiphany he had undergone when he had agreed to come and speak at the Jaipur Dialogues. And at the last moment, why did he chicken out? Because there were certain pressures that I am in the know of. And those pressures were not very holy pressures. They were unholy pressures. And there are also other things about Mr. Shashi Tharoor which I am privy of, and that relate to his franchise operations. Once upon a time, the Kochi franchise. So that, of course, I thought Shashi Tharoor is not going to go that path. Now, since he has chosen to go that path, I am also under no obligation to keep those secrets. I will reveal them by and by. Why Shashi Tharoor chose to do. Next. Question Shantanuji said in UP temple circuit tourism and economy will be booming. I believe it's good and important for growth, but just a little worried that if it will impact the spirituality of the places. After all, temples and temple towns are dharmic places first, then economic. How to create the balance? देखिए जी, as far as the spirituality is concerned, ultimately the spirituality has to come from within. Or spirituality from within also is facilitated if the external environment is good. And I believe they have tried to create an external environment which is absolutely top class. So I do not see any contradiction in this. Next. Did the JD director get a ticket from Congress? Yes, JD ex-director. The correct way to put it is the JD ex-director. Next. Anup, when will ED complete the investigation on the liquor gate case and start the trial in lower court? ED can't hold all of them in jail as they, AKSA, are fighting for survival. I think they were given 6 months by the Supreme Court. And that's the reason we had calculated that they will probably put AK under investigation or under questioning under duress, as is happening now, when 3 months would be left. So I was thinking that they would be arrested around about end of May after the elections were over in Delhi. But they've chosen to do so, so they've got much longer time. So the 6 months limit that the Supreme Court put on them, they would be able to comply with. And do you agree Shiva is an alien, as Sadhguru says? Hardly. Shiva is very much within you. What is Shiva? Shiva is the pole that joins Jada and Chetan. जड़ और चेतन को जोड़ने वाला जो स्तंभ है वह शिव है. शिव के माध्यम से ही
जड़ और चेतन आपस में मिलते हैं। तो ये तो हर एक के शिव तत्व जो है वो शिव हर एक के अंदर है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात बोली सदगुरु ने। कोई बात नहीं, सदगुरु जी कई बार अच्छी बातें भी करते हैं, कई बार अजीब बातें भी कह जाते हैं। आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट, शाश्वत सिंह सर, आपका सोनम वांगचुक पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि कोई फॉरेन कनेक्शन है? जी, अब तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है मुझे कि पूरी तरह से फॉरेन कनेक्शन है, क्योंकि जिस तरह से वो भाई साहब जो हैं, अभी-अभी नया-नया उनको यूटी मिला। देखिए 25 साल से लद्दाख में ये चल रहा था कि इसको यूटी बनाया जाए, और यूटी बनते ही नया एजिटेशन शुरू कर दिया मिस्टर वांगचुक ने, और मिस्टर वांगचुक सोच रहे हैं कि वो बहुत बड़े कोई वो बन गए हैं वो। मुझे तो लगता है चाइना का पूरा इन्फ्लुएंस है। तो स्पेसिफिकली क्योंकि चाइना फेसिंग एक एरिया है और बहुत ही सेंसिटिव है सिक्योरिटी के मामले से, दैट इज़ द रीज़न पीपल डू नॉट वांट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज़ नॉट वांट टू बर्डन इट विथ सम काइंड ऑफ असेंबली। वैसे उनकी जो टोटल पॉपुलेशन ही कितनी है? आपको पता है उनकी जो इलेक्टोरेट है, टोटल इलेक्टोरेट लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो 1.5 लाख से कम है। 1.5 लाख से कम की जो इलेक्टोरेट है, उसके लिए असेंबली बनाई जाएगी क्या? नेक्स्ट, डिड एबीवीपी विन इन जेएनयू? Sorry to inform that I think we jumped the gun a little bit. ABVP lost all the 4 seats ultimately. Next, Indian Navy doing anti-piracy ops. What is India trying to achieve by this? India is showing its muscle, sir. India is showing its muscles that, okay, you may have the numbers, but you don't have the equality. The equality that the Indian Navy has displayed, the Indian naval officers and ratings have displayed, has been taken almost everybody by surprise. They're really thinking that, okay, if this is the equality, then okay, then one naval ship, one Indian naval ship is equal to 10 of others. That's what they have demonstrated. They have created awe and shock among in the naval fraternity of the world. ABJ, there are a lot of videos of Ajit Doval's brain behind major national security operation. But is it okay to make such videos? Shouldn't NSA and intelligence operation and operatives be clandestine? Will it breach our security? भाई साहब, जो कुछ भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे है, that is available to everybody. OSINT is available to everybody. So, as long as you are not compromising with the top confidential classified information, which I don't think any of us has any privy to, we are not privy to that information. So, even if suppose Jaipur Dialogues is concerned, or some other uh, bodies are concerned, some other YouTubers are concerned, they are all making it out of OSINT, open source intelligence. अंशुल शर्मा, आज स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म देखी, शानदार फिल्म है, बहुत दुख हुआ जानकर के कितना कुछ छुपा लिया गया हमसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। एक शो सिर्फ इनको एक्सपोज करने के लिए बनाइए, बना देते हैं। वैसे तो पुराने शोज पड़े हुए हैं बहुत सारे, लेकिन आप कह रहे हैं तो नया शो बना देते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। रजत आहूजा, तो मैंने सुना है जयपुर डायलॉग के ओनर संजय शर्मा राजस्थान में कांग्रेस की सीट से टिकट लिया है। प्लीज रिप्लाई टू व्हाट्स गोइंग ऑन। भाई साहब, ओनर क्या होता है ये बताइए? जयपुर डायलॉग्स क्रिएट मेरा किया हुआ है। जयपुर डायलॉग्स के 2 भाग हैं। एक भाग जो है वो इवेंट्स ऑपरेशंस देखता है, उसका नाम है जयपुर डायलॉग्स फोरम, और वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है। उस एनजीओ में समाज के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और दूसरा भाग जो है वो डिजिटल ऑपरेशंस देखता है, जिसमें यूट्यूब शामिल है, जिसमें इंस्टा शामिल है, जिसमें ट्विटर ऑब्लिक एक्स शामिल है, फेसबुक शामिल है, पोर्टल शामिल है। वो जेडी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड देखता है।
आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने कितनी बार हमको कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए हैं, वो सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस जेडी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड में यही आते हैं, क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस वही करता है। तो सुनील शर्मा जी जो थे, वो समाज के, जयपुर के जो सबसे प्रबुद्ध परिवार हैं, उनमें से एक हैं। पूरे जयपुर के सबसे पुराने कांग्रेसी परिवार में से एक हैं। संभवतः सबसे पुराना प्रजामंडल जो हुआ करता था, जब यहाँ पे राजा हुआ करते थे जयपुर में, तो एक प्रजामंडल हुआ करता था जो कांग्रेस की ब्रांच हुआ करती थी। उसमें उनके पिताजी, दादाजी जी उस समय से इनका परिवार कांग्रेस में है। अब कांग्रेसियों को ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस जो है एक पूरी तरह से असहिष्णु पार्टी है। वो ये ज़रा-सा भी, इतना भी ये सहन नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी कि कोई जो है, वो कहीं भी थोड़ा बहुत भी बातचीत कर ले। अब वो उस प्रकार की राजनीति का उदाहरण दे रही है, जिस राजनीति में जो विरोधी हैं, वो विरोधी ना होके दुश्मन हो जाते हैं। तो ये जो आपने उदाहरण देखा, वो उसी का है। जबकि वो बेचारे, उन्होंने बहुत आप देखते हैं, बहुत ही प्रबुद्ध हैं। उनके यदि वीडियो आप देखेंगे, चाहे जयपुर डायलॉग्स पे देखें या दूसरे उनका खुद का फेसबुक है, खुद का उनका यूट्यूब है, उस पे देखें, तो वो तो जो बेसिक कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, यानी 50s वाली, उससे नहीं हटते। लेकिन आजकल की जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है ना, वो 50s वाली कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बहुत अलग हो चुकी है। तो ये समस्या पूरी तरह से कांग्रेस की है भाई जी। ये समस्या ना तो जयपुर डायलॉग्स की है, और समस्या ना तो सुनील शर्मा की है। Today, Congress nominee from Jaipur, Sushil Sharma, clarified on NDTV that he is not linked to Jaipur dialogue. सही बात है। उन्होंने तो 6 महीने पहले रिज़ाइन कर दिया था। तो उस समय उनका विचार बना था कि वो कांग्रेस में टिकट माँगेंगे, तो उन्होंने जयपुर डायलॉग से रिज़ाइन कर दिया था कि लोग जो है वो फालतू में इसमें वो करेंगे। लेकिन यहाँ सुनता कौन है? नक्कार खाने में धोती की आवाज़। He is definitely not linked to Jaipur Dialogues forum these days, and he was never linked to JD Digital in any way. यानी जो हमारे यूट्यूब्स के जो वीडियो आते हैं, उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अलावा इसके कि कभी-कभी उनको पैनल पे बुला लिया। पैनल पे बात कैसी की थी आप देखिए ज़रा। पैनल पे हमने उनसे बुद्ध के बारे में बात की, हमने उनसे रैदास के बारे में बात की, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। तो इसलिए कांग्रेस वाले परम मूर्ख हैं, परम दुष्ट हैं, परम दुष्ट हैं, और असहिष्णुता की सीमा पार कर चुके हैं, जिसमें वो उनके जो पप्पू हैं, उनके पप्पू के बारे में कोई भी थोड़ी बहुत भी आलोचना करे तो उससे वो दुश्मनी ठानते हैं। ये इस तरह के लोग हैं, और न केवल उससे दुश्मनी ठानते हैं, वो गिल्ट बाय एसोसिएशन भी कर लेते हैं कि भाई इनसे कोई एसोसिएटेड भी है। यार, एक ही परिवार में लोग जो हैं, वो अलग-अलग पार्टियों में होते हैं। कभी किसी ने कोई इसका बुरा नहीं माना। अभी कांग्रेस ही होना है। आम आदमी पार्टी जो इनको ज़िंदगी भर गाली देती रही, उससे अभी भी समझौता कर लिया। तो वही मैं फिर कहूँ कि प्रॉब्लम कांग्रेस में है, प्रॉब्लम पप्पू में है। नेक्स्ट, लास्ट मिनट प्रोग्रामर, as per you, there is any buzz in OBC community on ground level regarding caste census and reservation limit increase promise of IND offense? Total difference, zero buzz। और उसका कारण है, उसका कारण ये है कि भाई, there are so many fault lines within the OBC group. The OBC is an artificial group. It is not a homogeneous group. आपस में लड़ रहे हैं सब, इसको ज़्यादा मिल गया, इसको कम मिल गया। So there is zero buzz. सुनील गुर्जर एसडी से सुनील शर्मा हारते हारते बचा जयपुर से, और करोड़ सौ रुपीस भी बच गए आपके जयपुर डायलॉग की वजह से। सुनील जी, अब आप मजे ले लीजिए। नमस्ते सर। कांग्रेस जो 4-5% वोट से हारती है, इतना तो भाईजान लोग रात मेहनत करके भर देंगे। क्या कांग्रेस को भविष्य में बैठे बैठे ही सत्ता मिल जाती? आपको किसने कहा 4-5% वोट से हारती भाई? हाँ, आंकड़े दोबारा देख लीजिए, गूगल पे सहजता से उपलब्ध हैं।
पिछली बार 37.7% बीजेपी के थे अकेले, 45% एनडीए के थे और कांग्रेस के 20% से कम थे। शक्तिमान सर, इज चूजिंग 400 गुड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी? Otherwise, BJP wouldn't need to ally with likes of RJD and could finish them for good. They haven't allied with RJD भाई, RJD से तो नहीं अलाई किया उन्होंने। शायद आप JDU कहना चाहते हैं। And 400, it's a psychological operation also, besides being a target for their cadre. I think it's a good political strategy. Next, राज, संजय सर, क्या आपने सिविल सर्विसेज के टाइम भी कुरान को पिन पॉइंट करके कोट करते थे? आपके इतने वीडियोस देखे हैं कि नाउ इवन आई कोट 9.120 एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू। ना भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने कुरान का क्यों भी नहीं पढ़ा था, और ये सब जो है ये इंटरनेट के आने के बाद और मेरे 2010 में ट्विटर ज्वाइन करने के बाद ये जानकारी मुझे मिलनी आरंभ हुई, क्योंकि भाई आए तो हम भी उसी एजुकेशन सिस्टम से हैं ना जिससे सारे आए हैं। उस एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की बात का कोई स्थान ही नहीं था, और जो कुछ भी और संस्कार हम अपने घर से ले पाए थे, संस्कृत आती थी हमको, तो इसलिए जो है उसको ग्रहण करने में आसानी हुई, बस इतना ही हुआ। लेकिन दिस इज एंटायरली ड्यू टू द इंटरनेट रेवोल्यूशन दैट आई केम टू नो अबाउट द कुरान। नहीं तो हमें तो कुरान के बारे में पता नहीं था। सबसे पहले जब आप इमेजिन कीजिए, व्हेन आईसिस स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन, देन आर्टिकल स्टार्टेड कमिंग आउट, और सबसे पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आई डोंट रिमेंबर द ऑथर, दैट आर्टिकल सेड दैट डेमोक्रेसी एंड इस्लाम आर इनकम्पैटिबल, सो व्हाटएवर आईसिस इज सेइंग इज करेक्ट। उसके बाद से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। नेक्स्ट, कपिल पांडे, राम राम सर, जहां कांग्रेस के एमएलए हैं वहां सावरकर मूवी रिलीज नहीं हुई थिएटर में। भाग्यवश मैं ये मूवी नहीं देख सकता थिएटर में। क्या कांग्रेस का एमएलए हैं या कहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट तो ये कर सकती है, एमएलए की इतनी कब से औकात हो गई कि वो मूवी की रिलीज रुकवा सके? कोई बात नहीं, आ जाएगी कुछ दिनों में ओटीटी पे। कब तक ये, अब किसी के हाथ में स्पीच फ्रीडम, फ्री स्पीच दबाना नहीं रह गया है। कोई भी फ्री स्पीच को दबा नहीं सकता। एक ज़माना था जब मारिच झापी जैसा नरसंहार 10,000 व्यक्तियों की हत्या हुई और वो लोगों को 10-10, 20-20 साल तक पता नहीं चला। उस समय मैं कलकत्ते में रहता था, पढ़ता था, और किसी भी अखबार में एक शब्द तक नहीं आया। जहाँ वो नरसंहार हो रहा था वहाँ से मुश्किल से मेरे ख्याल से 100-150 किलोमीटर ही थे हम, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चला। क्या आज वह संभव है? ना, आज संभव नहीं है। नेक्स्ट, आई थिंक मिसेस केजरी देवी forgot to replace Bhagat Singh's photograph with the photo of AK-420 in her address to the nation. Yes, yes, yes. Well, quite right. भगत सिंह का क्या करेगा आप? ही इज द न्यू भगत सिंह, आई एग्री। ऐसे अंशुल शर्मा, आज वैसे सुनील शर्मा जी को रिप्लेस करके प्रताप सिंह खाचरियावास को मिल गया है, उनके क्या चांसेस हैं? देखिए सही बात बताऊं तो कांग्रेस के कोई चांसेस जयपुर शहर से थे ही नहीं, और खाचरियावास जो है वो कम से कम 5 लाख से हारेगा, कम से कम 5 लाख से। विशाल, while most temples are still under government control, some clowns are talking about Ram Mandir becoming highest revenue mandir, another mandir for peacefuls. ये नहीं समझ में आया, मेरे क्वेश्चन नहीं समझ में आया भाई साहब। विशाल जी, राम मंदिर इज नॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल।
बिहार से संग्राम सिंह ने बकवास किया है, इसके चलते भाजपा को नुकसान होगा क्या? मैंने देखा नहीं है क्या बकवास किया है भाई। नेक्स्ट, Sunil Sharma dropped out just now. Is he Punjabi? No, he's not Punjabi. He's very much from Jaipur. The BJP IT cell is not performing well. It's high time to replace Amit Malviya. What's your opinion? तो इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ? What is the parameter for judging performance? Next, Ram, can you confirm whether the ABVP has indeed lost the JNU election? I think yes, they have lost the JNU election. Next, Vishwajit, sir, Kangana got the ticket from BJP to fight from Mandi, Himachal. What are your thoughts? Will she win? She will win very easily. Very easily, क्योंकि प्रतिभा सिंह को टिकट मिलेगा नहीं. प्रतिभा सिंह is the only one who could have challenged her. Now, what's your opinion on vegan? They say dairy industry tortures the cows, which is true in a sense. But do we stop drinking? If not, then question comes: is we are okay to torture the cow, not okay with beef? How to answer this dilemma? Now, this industrialization of dairy is definitely not in tune with the Indian ethos. Okay, if you see the Indian way of dairy keeping, तो हम जब वो गौशालाओं की बात करते हैं और गौशालाओं के साथ जो और जो चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं, so we are talking about the Indian way of dairy keeping, which is in consonance with nature. If you talk about the way the dairy is done abroad, then definitely a cow is only treated as it's not even treated as an animal. It is treated as a product, and that is not the way we treat it here. We treat cow as a family member. You know that. Anybody who has reared cow in their home know that we treat a cow as a member. And we have reared cows in our household. And if malpractices are coming into the dairy sector, they need to be addressed. You don't cut off the head to cure the headache. Vinod Kumar Arora, Jai Shri Ram, Dixit ji, what is your take on Kumar Vishwas on बीजेपी टिकट्स? अरे कुमार विश्वास क्या है भाई, उसकी भी कोई उसकी कोई सच्चाई है क्या किसी तरह की उसकी, या उसका कोई ठौर है? बेपेंदी का लोटा है. पहले आम आदमी पार्टी में रहता है, फिर कहीं दूसरी जगह जाता है. वाइफ को जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनवा देता है जाति के आधार पर, अशोक गहलोत से, कांग्रेस से. सो द मैन रियली हैज नो मॉरल्स भैया. आप जरा कभी बुला के देख लो, बिना पैसे के कहीं नहीं जाता. पैसे रखवाता है पहले 6 लाख, उसके बाद कहीं जाता है. देवेंद्र जोशी, प्रणाम संजय जी, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द लेफ्ट विनिंग जेएनयू अगेन? व्हाट आर द स्टेप? देखिए, दिस इज एक्चुअली दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड दैट आफ्टर 50% वोट्स वर काउंटेड, बीजेपी वाज लीडिंग. वहाँ पे जो 3 मेजर स्कूल हैं उनके, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें उनकी सारी स्ट्रेंथ जो है, और वो सबसे बड़े-बड़े हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स भी उसी में हैं. तो अभी तक क्या होता था कि जो भी स्टूडेंट्स लेते थे, दे यूज्ड टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ some kind of interview, then some kind of an internal test. Now they are being taken in through CUET. So in 2-3 years you will see, in fact in the next elections you will see, because they hold elections every 2 years. In the next elections you will see that they will lead right till the end and not just 50% of the way, because the structure is changing now because of CUET, Central University Entrance Test. Next, Vishal,
What is the constitutional provision if tomorrow 100, 200 million people demand a separate country? Will government have to oblige in that case? India is a union of states. I'm telling you the constitutional position. India is a union of states. India is not a federation. Therefore, no entity, no state, no UT has a right to secede. Then union has full power to create more states. You can always have a situation they can demand a separate state. They cannot demand a separate country, because as soon as they demand a separate country, it becomes treason, and then it will be dealt accordingly. Example, Jammu and Kashmir. Vishal have been requesting to talk about NWO. I think I've already addressed this question. Aman, Ankit, Jai Shri Ram sir, what happens next after the general elections? We all know Modi ji will be back with a huge majority. What do you think will be the major changes he keeps hinting at? Well, I'm trying to make sense of it too. Since thinking of writing a book on that, let's see. Maybe I'll convey my ideas through that book. Naveen Kumar, flash news in Hyderabad, 500 Muslims attacked on Hindus. It happened just today during Holi celebrations. Normal stuff, I guess. This keeps happening in Hyderabad. And you have secular governments. As long as you have secular governments, it will keep happening. Because Indian secularism basically anti-Hinduism. And when it comes to what is called appeasing the biggest minority, it was asked to Yogi Adityanath that why don't Muslims vote for you? He has that. I think he's given the best answers that I've ever heard. He says that because we do not demean the Hindus. For a Muslim, it is not enough that you do things for him, but you also have to demean the majority. Why? Because in his religion, the non-Muslim is meant to be demeaned. So unless a political party demeans the non-Muslim, the Muslim is not going to vote for him. And this Congress is happy to do. Some other regional parties are happy to do. Mukul Shukla ji, did you watch Savarkar movie? If yes, what is it? Not yet, sir, not yet. I'm intending to watch it in the next few days. Actually, Holi आ गई तो होली के चक्कर में वो सब पोस्टपोन हो गया. Sir, your views on Sonam Wangchuk fasting? I have already told. बोल दिया मैंने so. I think it's inspired by China. Next, M. उपाध्याय, क्या मोदी जी को लोकशाही खत्म कर देनी चाहिए? ऐसी तो कोई आवश्यकता है नहीं. लोकशाही से भी अच्छा खासा काम चल रहा है ना. Next, Sunil Gujar, 2G case will be heard by High Court soon. Why CBI took so much time in approaching High Court? Even I'm intrigued by that delay. There's too much of delay. And it all happened during this very government. So why should that much of time be taken? Next. Shashwat Singh, sir, I don't have any grudge towards our MP and MLAs, but some of them have assets worth more than 100 crore, still eligible for pension. So are we not making a mockery of social security? Our paramilitary Jawan, SSC officers not eligible. What's your take? I agree with you entirely, Shashwat ji. I entirely agree with you. This pension should be on a need basis. But how will you work out that need basis? You know, that in our country, I have seen people, billionaires, even they don't mind getting freebies. Next. सुनील गुज्जर, पंडित जी को सलाह बीजेपी ज्वाइन कर लें. उनको डायरेक्ट दे दीजिए ना. उनका ट्विटर हैंडल है I_Sunil Sharma. कुमार शांतनु सर, इलेक्शन बॉन्ड के बाद अब सभी लोग को नाम बाहर आ गए, काला धन बढ़ जाएगा. क्या कोर्ट ने नया प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया बिना कोई सोल्यूशन के दिए बिना? एक्चुअली मैं देख रहा था
कि जो आंकड़े आए हैं उसमें जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम शुरू हुई थी उस समय 92% मिला था बीजेपी को पहले साल में और 8% बाकी को मिला था, क्योंकि बाकी सब जो थे वो ब्लैक में लेते थे। लेकिन फिर उन्होंने गेम कर लिया था पूरा सिस्टम और एंड में 53% दूसरों को मिला था और 47% बीजेपी को मिला था। अब प्रॉब्लम उनके लिए होने वाली है, क्योंकि ब्लैक मनी का मामला भी बड़ा मुश्किल हो गया है, आप जानते हैं, डिमोनेटाइजेशन के और डिजिटाइजेशन के बाद में। 500 रुपए के नोट बोरे बोरे भर भर के कौन कहाँ तक कब तक करेगा। तो 2000 के नोट थे तब तक तो ठीक था। तो ये प्रॉब्लम ऑपोजिशन को ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। इन्होंने नाटक तो बहुत किया, लेकिन उल्टा खुद के सर पे जूती पड़ने वाली है। सॉरी, खुद के सर पे जूती पड़ेगी इनके। शिवम संजय सर को नमस्कार। प्लीज इनवाइट शंकर चरण जी मोर। वाई बीजेपी लीडर्स टेक हिंदूज फॉर ग्रांटेड एंड डू पैक्ट्स विद जिहादीज, कॉमीज, missionaries on their term, just like Charkha man. Their extreme focus on organization is fatal. Vigilance was first goal of Sangh, which is never seen anywhere. Waqf was passed with help of BJP. I think you've got a point there. Definitely you've got a point there. And these are the areas we have addressed, but I've been told that they will be addressed in the third term. Let's see. They've done quite a few things which would not have been done if they were not there. Let's see what they do in 3.0. In any case, we have been promised that there would be some very big decisions. So let's keep putting pressure on them to include these ideas in those big decisions. MMG, would presidential style of government be better for a democracy like India? Its advantage, disadvantages vis-a-vis current parliamentary democracy. I think the halfway house, like the French system, is probably the best for us. गोल्डी ब्रार, संजय सर, अभिषेक बैनर्जी देशभक्त वाला पागल हो गया है, वो आकर सब RW जर्नलिस्ट को गाली दे रहा है, इसको धो डालो। अच्छा, देखता हूँ भाई। क्षितिज शर्मा, sir, I am seeing that even though BJP would win, the reservation would increase nonetheless and come even in the private sector in future. Your opinion? See, everybody says that it will come in the private sector. The private sector, it need not come because there are other devious ways that the American corporates have found out of enforcing them. Things like DEI and ESG. Those are the ways in which they will bring it about. Why? Because the entire reservation system is based on creation of posts. Now, even if you enforce it in the private sector, they will get around it very easily by not creating posts. Simply, very simple. They not create posts. Then what will you do? They will use contract labor. They will use consultancies. They will use many other means, and then of course you will be able to. You'll not be able to use it all across. Otherwise, the economy will go down. The manufacturing will go down. So many other adverse effects will be there. Your ratings will go down. So you will go there only with enforcing it where there is an identifiable labor force. But then for private sector, it's very easy to get around it. Next. Shriyam, will there be an action taken against Rajdeep Sardesai by TJD? We were examining the tweets that were put out by Rajdeep Sardesai. But we are trying to locate. It seems that he has not taken our name directly, only hinted at a certain communal organization or something like that. So I will be putting my legal hat on and will try and see how to fix that. How to
fix this malefic force. Anuj Mehta, Jai Shri Ram, Sanjay ji, your views on Haryana Vidhan Sabha and Lok Sabha elections. Please, BJP doesn't look a very strong situation. High anti-incumbency against Khattar. Rift between Anil Vij and Naib Saini. I am from Haryana. Ground reality looks different from what you show on your analysis. अभी तक तो मैंने अपनी एनालिसिस आपके सामने रखी ही नहीं. जब हम आएंगे आपके सामने एनालिसिस लेके तो देखेंगे. वैसे तो आपके हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट चलता ही है, और ये समस्या तो कांग्रेस के अंदर भी है. आपको पता होगा कि भाई हुड्डा वाले लोग जो है वो राजकुमार सैनी के लिए जाने से कितने नाराज है. आप जानते हैं राजकुमार सैनी जाटों को कितना गाली देता था. अब वो कांग्रेस में चला गया, उसको हैप्पीली उन्होंने ले लिया. भाई ये समस्या तो उधर भी है. हरे कृष्णा, हाउ मेनी सीट्स वुड बीजेपी विन फ्रॉम 25 सीट्स ऑफ राजस्थान and top 5 seats in India you will be closely watching out for? Well, 20 by 25 is certain. Let me say this. Now 5 will depend on campaign and candidates. Top 5 seats in India you will be watching out for. Offhand नहीं कह पाऊंगा, बाद में बताऊंगा. Anish, so please expose Acharya Prashant. He is the biggest leftist. He is anti-Hindu and gave interview to leftist channel. His biggest scam of 21st century. पता नहीं भाई, मैंने तो उनका एक एपिसोड अभी देखा था और मैं उनकी बात समझ ही नहीं पाया. और अगर मैं नहीं समझ पाया तो मुझे पता नहीं दूसरे लोग कैसे समझते हैं. उमेश बौराई, संजय जी, योर प्लेटफॉर्म हैज गेन्ड क्रेडिबिलिटी एज अ सीरियस राइट विंग प्लेटफॉर्म. इन फ्यूचर intellectual competition will be more. What is your future plans to make platform bigger and keeping it serious? Well, keeping it serious, I don't know what you mean by keeping it serious. Are political discussions not serious discussions? I think if that is the meaning, I won't agree with you, because political discussions are also serious discussions. International discussions are also serious discussions. Satire is also very serious discussion. So please define what you mean by serious discussion. And competition, see, we have a certain purpose. And the more the merrier. More people come, we are not worried. Because I think the pie will get bigger. We will draw in more people. So that's a happy situation. That is our purpose. How does it matter? वरुण, अगर अलुज्जा, अलमनात और अल्लात की मूर्ति तोड़ना सुन्नत है तो फिर इन 3 देवी का मंदिर बनाना कैसा रहेगा? अरे सऊदी अरब में खुद बन रहा है भाई, बाकी की तो छोड़ दो. वक्फ बोर्ड के जमीन पर कैसा रहेगा? तो वो तो भाई पहले उनको, इनके जो मालिक लोग हैं ना, उनको बनाने दो, फिर गुलामों से कहेंगे चलो तकलीद करो. निरंजन बगाड़े, धन्यवाद. राहुल मलिक, सर प्लीज कॉल डॉक्टर रिजवान अहमद, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एंड प्रदीप सिंह जी ऑन योर शो. रिजवान अहमद भाई जी, रिजवान अहमद के पीछे हमने एक बड़ा शो किया हुआ है, पहले जरा उसको चेक कर लो आप. खाली कोई मुसलमान हो और मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगे, उसको देख के हमारे हिंदू भाई लोग जो है ना, वो बड़े अभिभूत हो जाते हैं. उनको लगता है आहा, ये क्या बढ़िया बड़ा आदमी है. थोड़ा रिसर्च करो. मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि भाई हमारा उनका मुकदमा चल रहा है. मैं बोल दूंगा तो आप कहोगे आप प्रेजुडिस हो. लेकिन आप लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि भैया, लखनऊ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वकील हैं. किसी फैमिली कोर्ट के वकील से पूछ लो रिजवान अहमद के बारे में, लोअर कोर्ट के वकील से पूछ लो, हाई कोर्ट में तो उनको कोई जानते नहीं है. पूछ लो ना ये चीज क्या है. ट्विटर पे ही डालोगे और कहोगे कि डीएम में जवाब दे दो तो 25 लोग को बता देंगे. पुष्पेंद्र जी का तो क्या कहें साहब. पुष्पेंद्र जी वो तो बहुत बड़े हैं,
हमारे लेवल के नहीं हैं, हमको अपना लेवल का नहीं समझते। प्रदीप सिंह जी भाई व्यस्त रहते हैं, देखिए वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो व्यस्त रहते हैं, अपना करते हैं। हमने कई बार प्रयास किया, कुछ बार आए भी हैं, लेकिन उनका साथ आते नहीं है वो। अमृतांश व्यास, डू academic qualifications matter for key postings of bureaucrats? No, zero. How are scholars chosen for Fulbright and the likes? No criterion. You only need to have what is called certain degree of expertise in the field of that particular public policy for which the scholarship is being advertised. Role of internal politics in it. Well, not much, but then the civil services itself is a den of internal politics. Next. Lack of development, Bihar, आपके विचार, FC, feudal, capture politics and bureaucracy. आपने चारों चीजें तो लिखी दी, साथ में क्राइम भी लिख लीजिए। नो प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स, माइग्रेशन टेरेबल। जहाँ लैंड रिफॉर्म्स भी हुई हैं वहाँ भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है ना। आंध्र प्रदेश में क्या है? माइग्रेशन टेरेबल, HDI, जीरो इंडस्ट्री, अनलाइक वेस्ट एंड साउथ इंडिया। भाई आप इसको जो है कंपेयर कीजिए, यूपी में क्या हुआ। यूपी में यू गॉट गुड लीडरशिप, बिहार हैड एक्सीलेंट लीडरशिप टू बिगिन विद, लेटर ऑन दे went into their different area. UP and Bihar were similar about 15-20 years back, but now you see where is UP and where is Bihar. So you have to make the comparison, you have to compare like with like. जय हिंद सर, मैं अपने 20 सेकंड में हूँ, आप प्लीज गाइड। मैं अपने 20s में हूँ, आप प्लीज गाइड कीजिए कि अपने देश और धर्म के लिए हमारी यूथ कैसे योगदान दे सकती है, स्पेशली जो अटैक्स एंड प्रोपेगेंडा होते रहते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर। बिल्कुल नैरेटिव जो बने हुए हैं, जो ये कम्युनिस्टों ने, लेफ्टीज ने बना रखे हैं, इन नैरेटिव्स को चैलेंज कीजिए। और बहुत आसान है, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। जयपुर डायलॉग्स के शो पीछे के देख लेंगे तो सब मिल जाएगा आप। Anuj Mehta, your views on Haryana elections, rift between CM Ambala seat tough for both Lok and Vidhan Sabha and few more seats and nearby please find someone expert in Haryana. बिल्कुल, हम तो चुनाव आ ही गए हैं, लगातार आते रहेंगे एक्सपर्ट्स। Abhijit Mondal, what is impact of NRC when local administration is corrupt? Very good question. Very good question, Mr. Mondal. Local administration can actually make or mar the NRC as it happened in Assam. So good local administration is an imperative. Next. Sanatan sir, BJP cadre not active. Another 2004, your opinion? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। कम से कम राजस्थान में मैं बैठा हूँ, यहाँ तो नहीं दिख रहा, अगल बगल में भी नहीं दिख रहा, यूपी में भी ऐसा नहीं दिख रहा। आप कहाँ की बता रहे हैं? आपने स्पेसिफाई नहीं किया। नेक्स्ट। विशाल, follow up on previous JNK population is 12 million. I was talking between 200 million. Can the Rama Bhakt woke CJI technically could force government to secede? No, bhai. I told you the constitutional position. And why would he? As far as my understanding of his concern is maybe what is called quote unquote progressive, but he is not anti-national. He is not anti-India. Aman, Nilesh Oak says Sri Lanka is not the Lanka of Ravan. Thoughts? Yes, that is one of his hypotheses. We'll be bringing him soon, then you can ask him all these questions. Someone spoke about vigilance is the primary role of Sangha. I suppose that it is not just for vigilance, but for organized self-defense as well. Like Veer Savarkar said, militarization of Hindus. Yes, you're right. You're right, actually. You're absolutely right, Gaganji. I agree with you.
Niranjan Bagade, if you make taking bribe an offense but giving bribe not an offense, then will the reporting on corruption increase? Will public freely report the corrupt? Well, that was the situation before the amendment in the Prevention of Corruption Act, the 2018 amendment in the Prevention of Corruption Act. That was the situation. So, what used to happen? The situation was much worse. Next, मुस्लिम लीग ने सुनील शर्मा को टिकट दिया है जयपुर. आप बहुत पीछे चल रहे हैं. नेक्स्ट, मिस्टर ए, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन कुशल मेहरा, श्याम शर्मा? See, I don't like to talk behind people's back. But I don't watch them either. Pratik Kumar Agarwal, when are you calling people like Jay Shankar and other politicians for podcasts? Do you think BJP has not done enough in education field? Second question first. Yes, I do not think they have done enough. They have done something, but they could have done more. Then when are you calling people like Jay Shankar and other politicians for podcasts? Hopefully soon. Hopefully soon. So I think that's the end of the questions. We close the AMA. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. जय